चलो, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रणव ओझा और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भाई एफईसी का जो हमारा कल का पेपर है उसमें यूनिट 3 जो के एमसीक्यू है उसे कैसे लर्न करने हैं, कैसे करने हैं। बहुत सारे वीडियोस हमारे यूट्यूब पे है, आपको लिखना है प्रणव क्लासेस और ये फंडामेंटल लिखना है, इंग्लिश लिखना है, नोट टेकिंग नोट मेकिंग लिखना है, आपको ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। और अगर आपको इस पे दूसरा वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन एंड बिजनेस कम्युनिकेशन आर कॉल्ड, क्या लिखा है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ओरली के बोथ ए एंड बी। हाँ मतलब देखो, सुनो, बोलो, पढ़ो, लिखो, बद्दुआर। अब देखो यार कैसे करना है। कल जब हमारा 35 एमसीक्यूज करने हैं, 35 एमसीक्यू पौने 2 घंटे मिलेंगे, तो पहले घंटे में 20 एमसीक्यू करने हैं, दूसरे घंटे में 15 एमसीक्यू करने हैं, बराबर। तो शांति थी जो हम હવે આ जो सेकंड एमसीक्यू समझाओ कि बिजनेस कम्युनिकेशन एम्फेसाइज मतलब किस पे ज्यादा ध्यान देता है, इंक्रीजिंग ऑन, देखो यार पर्पस, बट ऑब्वियसली कुछ काम होगा तभी कम्युनिकेट करेंगे। सेकंड क्या लिखा है, फॉर्म कैसे लिखना है, कंटेंट क्या लिखना है, कि ऑल ऑफ दिस। अब यहां से मैं पहले देखता हूं इसमें से गलत कौन सा है। यहां देखो जरा, पर्पस आएगा, हाँ, फॉर्म आएगा, हाँ, कंटेंट आएगा, हाँ, तो सब आएगा, तो ऑल ऑफ दिस ऐसे करोगे तो बकायदा आपके मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे। चलो बेटा यहां देख लो, डैश डील्स विद बिजनेस रिलेटेड इश्यूज। अब यार कौन कौन बिजनेस रिलेटेड इश्यूज करेगा, क्या लिखा है, डैश डील्स विद बिजनेस रिलेटेड इश्यूज, फंक्शंस एंड इंफॉर्मेशन, कौन करेगा। देखो मेरी बात सुनो, बोलने का, सुनने का, वो बिजनेस के लिए नहीं होता है, तो ये बिजनेस के लिए नहीं आएगा, जो बराबर है। रीडिंग राइटिंग, अब यार बिजनेस के लिए रीडिंग राइटिंग हो सकता है, दूसरे किसी के लिए भी हो सकता है। बिजनेस में खाली बोलते हैं ऐसा नहीं होता भाई, लिखते भी है। तो ये 3 ऑप्शन तो नहीं आएंगे, तो बचा कौन सा ऑप्शन, तो भाई बचा हुआ ये वाला ऑप्शन, बिजनेस which is less organized, direct, does not allow any specific format। बोलो बेटा, अब बिजनेस कम्युनिकेशन स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, पहला बिजनेस कम्युनिकेशन स्पेसिफिक होता है कि भाई मारे रजा જોઈએ છે, इसलिए ये ऑप्शन नहीं आएगा। क्लियर। अब बचा ये तीनों में से, विच इज लेस ऑर्गेनाइज। अब रीडिंग राइटिंग तो यार ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है, तो चलो यार ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। काले तो एग्जाम में આવવાનો જ નથી, પણ તમે આ રીતના કરી શકો છો ને। થર્ડ કયું છે, હવે लिसनिंग स्पीकिंग। लिसनिंग स्पीकिंग मैं बोलूंगा तू सुनेगी, तू बोलेगी मैं सुनूंगा, तो वो ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है, तो ये भी नहीं आएगा। तो बचेगा क्या, नेक्स्ट लिखा है विच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की, चेन ऑफ कमांड। बोलो, विच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हायरार्की। हायरार्की એટલે बराबर, हायरार्की એટલે मैं, फिर मेरा बॉस, उसके बॉस। तो ऐसा ऐसा देखो यार, ये सारे ऑप्शन है ना, एक नंबर के मतलब क्या है, चिंटी चोर जैसे ऑप्शन है। कैसे, लिसनिंग में हायरार्की होता है, पहले तू बोल, फिर तेरे पापा बोले, फिर ना ना ना, तो ये बात नहीं है, तो ये ऑप्शन निकल गया। रीडिंग राइटिंग में हायरार्की होता है, नहीं होता है। कम्युनिकेशन में तो बकबक होती है। चेन ऑफ कमांड तो धंधे में ही होता है, तो ये ही ऑप्शन आएगा। डैश इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ मैनेजिंग डिस्कंसेंट। बोलो क्या आएगा इसमें, आर्ट भी है, साइंस भी है, तो लिसनिंग आएगा नहीं, रीडिंग राइटिंग, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, कारण के आर्ट અને સાયન્સ તો 11 થી ભણતા આયા છે કે ભાઈ આ મેનેજમેન્ટ થાય, મેનેજમેન્ટ બિઝનેસ નું થાય, આ કમ્યુનિકેશન છે, આ ખબર પડી। इतना इजी हो जाता है अगर आप ऐसे लर्न करते हो तो। नेक्स्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन इज परसीव्ड थ्रू, बोलो बेटा, इमेज, ऑब्जेक्टिव, डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोसीजर टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। हाँ यार डॉक्यूमेंट प्रोसीजर तो है, ये बात तो है। सेकंड,
ઓબ્જેક્ટિવ, હા તો ઓબ્જેક્ટિવ હોगा સર આજ ક્લાસ છે, મારે આવવાનું છે, મારો સબ્જેક્ટ છે, મારે કેટલા વાગે આવવાનું જવાનું છે, ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इमेज, यस, तो ये तीनों यस हो रहे हैं, तो मेरा लास्ट आंसर ये वाला आएगा। अब दूसरी बात है, अगर अगर ये मैं बोलता हूं, अगर 60 मिनट में मैंने बोला आपको 20 एमसीक्यू करने हैं तो 3 मिनट मिलती है, तो घाई किस बात की, जल्दी 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 करने का नहीं। पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर टेलर्ड टू इट्स गोल हेल्प द स्टेक होल्डर टू अंडरस्टैंड द पिक्चर, ट्रू और फॉल्स। चलो अब 8 नंबर का पढ़ लेते हैं। 8 नंबर में क्या लिखा है, पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मतलब पता ही नहीं है कौन पढ़ाने वाले, सर पढ़ाने वाले, मैडम पढ़ाने वाले। आज किसका लेक्चर है, बोले सर आपको पता नहीं, हमारा तो होगा कि नहीं होगा। अब ऐसा होगा तो क्या स्टेक होल्डर समझ पाएंगे, बराबर है, और समझ पाएंगे पिक्चर? अरे नहीं यार, हाँ कैसे, कुछ भी पक्का नहीं है, ना ना ना, एग्री, अरे यार हाँ भी नहीं होता, एग्री भी नहीं होता, नहीं समझ पाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्लियर प्रिसाइज होता है। कल कितने बजे आने का अपने को, बस वो ठीक से, अगर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है क्या लेके आने का, क्या लेके आने का, परसों का पेपर, परसों का पेपर कौन सा है, तो स्टेट का लेके आने का। सर होना लाई तो क्या सीन ना लाई तो फिर सीन होता है, ये क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये चीज हो जाती है। नेक्स्ट, पुअर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अब सुन लो, विच लैक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, मतलब किसी को पता ही नहीं है क्या करना है, सारे आके बैठे हुए। अमोंग द फंक्शनल डिसीजन मेक्स द अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट। हाँ चा मुक्तो तो कैसा तो मुक्तो तो कैसा मारे को किधलो तुम दाने किधलो એને किधलो તેને किधलो, मतलब कौन वाक तो पहली ना वाक तो मारो है ना वाक तारा वाक, ठीक, बिकॉज यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नहीं है, यहाँ पे कुछ पता नहीं है, तो क्या है, क्या आएगा, ट्रू आएगा, फॉल्स आएगा, बोथ ए एंड सी, बराबर है। झगड़ा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन, मेन कम्युनिकेशन, बेसिक कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली, कैसे कैसे बोलो कैसे, ये ट्राइंगल याद रखने का, ए बी को बोलेगा, बी सी को बोलेगा, बराबर, ओके। और हमने सिखाया था तो ऑर्गेनाइजेशन ऑथोरिटी फ्लोज फ्रॉम અને રિસ્પોન્સિબિલિટી ફ્લોઝ ફ્રોમ, તો કારે આન્સર આપીશ फ्रॉम बॉटम टू टॉप। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्युनिकेशन। आई गયું ને આ, हाँ घरे જવાનું બેટા, हाँ, बिकॉज दिस ચાલુ છે પણ મેડમ ઘરે છે, ઘરે જા। and regulation for communication to be carried out internally as well as ट्रू के फॉल्स, ट्रू। अब पहले 2 बार आ गई वो। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बिल्डिंग बिकॉज दिस क्या लिखा है, दिस फॉर्म्स एंड रेगुलेशन ऑफ कम्युनिकेशन टू बी कैरिड इन, हाँ भाई बराबर, ट्रू ट्रू ट्रू। पिरामिड ऑर्गेनाइजेशन, पिरामिड क्या होता है, पिरामिड ऑर्गेनाइजेशन वेयर द चेन ऑफ कमांड कंटिन्यू लाइन ऑथोरिटी। आज तो हमने तो भणी गया, ओके, तो कયું આવશે, हाँ। હવે આ જો આ બોટમ ટુ ટોપ તો ના જ થાય ને, આ તો સ્ટુડન્ટ મને કહે સર ચાલ એકાઉન્ટ કર, શું થાય બોલીશ તું હેલી, तो बोलिस, हाँ तो ठीक है। कम्युनिकेशन आइदर फॉर्मल, फॉर्मल का मतलब, फॉर्मल का मतलब मैंने बताया था क्या था, इसमें भी वीडियो है, इसमें भी वीडियो है। फॉर्मल का मतलब स्पेसिफिक होता है, फॉर्मल मतलब क्लास में बात करते तो फॉर्मल, फ्रेंड के साथ बात करते तो इनफॉर्मल, बराबर। आइदर फ्लो स्मूथली व्हेन चेन ऑफ कमांड ब्रिंग्स, क्या लिखा है, क्या आ जाएगा, क्लैरिटी इन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन, इजी एंड सिंपल। और चौथो ऑप्शन तो जोवा दे, बट चौथो ऑप्शन तो ऊपर से, बराबर, हाँ। तो यहाँ पे आएगा, देख मुझे, अरे मारे, ब्रिंग्स रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, बराबर, ब्रिंग्स क्लैरिटी इन रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। હવે ના ના છે,
छेक नीचे आई गया। चलो 14 नंबर, दैट सिस्टम विच डिटरमाइंस द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अ सुपीरियर कैन मैनेज। जो बेटा आ तो मैं करायो तो बोलो एग्जैक्टली मारती કેટલા છોકરા કંટ્રોલ થાય સ્પાન ઓફ કંટ્રોલ. A team which has narrow span of control, why the CEO has a wider span of control. એવું હોય, એવું હોય. मैं તમને એક્ઝામ્પલ આપું, રતન ટાટા 1.5 લાખ 2 લાખ માણસોની ફોજ ચલાવે, તો CEO has wider span of. तो मैकडोनल्ड्स नो सीईओ जे छे यानी कितनी फ्रेंचाइजी, और यहाँ पे जो टीम वाला होगा उसको इसके जो स्टाफ होते हैं बस उसको ही संभालना है, बराबर છે. द डिसीजन तो આનો આન્સર શું આવે એ નહીં ભૂલવાનું. The decision making power is concentrated at one point and subordinate given less important and responsibility is called. બધું મારા હાથમાં તો એને શું કહેવાય, બધું મારા હાથમાં એને શું કહેવાય એક્ઝેક્ટલી. બધું મેકડોનલ્ડ્સ ના વર્કરોની જેમ બધા વર્કરોના હાથમાં તો એને કહેવાય ડિસેન્ટ્રલાઇઝેશન, બરાબર છે. કેટલા લોકોને કંટ્રોલ કરી શકાય, સ્પાન ઓફ કંટ્રોલ, ठीक है. नेक्स्ट क्या लिखा है, मिस्टर रवि इज मैनेजर इन ऑर्चिड कंपनी एंड ही हैज फुल ट्रस्ट ऑन हिज एम्प्लॉय, सो ही इज गिवन फ्रीडम टू and decision making to his worker. It is an example of decentralization. Very good. The manager is so autocratic, એટલે દાદાગીરી મારે છે, and wants to take all his decision by himself. બરાબર, બધું હું કહું તે કરવાનું, તો એને શું કહેવાય બસ. KFC, McDonald's, store, Domino Pizza are example of હમણાં જ બોલ્યો. Who has proved that specialization employees perform more efficiently? કોને? Henry Ford. हाँ, रतन टाटा तो बहुत सारा मानस है. एलन मस्क खबर कौन है? हाल या टेस्ला वालो मार्क ज़करबर्ग कौन है? आ फेसबुक क्यों? तुम्हारा इंस्टा वालो, तुम्हारा इंस्टा वालो. हाँ, तो आ ज़करबर्ग तो कहीं बोलियो नहीं. एलन मस्क टेस्ला वालो है, इलेक्ट्रिक कार बनावे છે. બાકી રહ્યા આપણા કાકા રતન ટાટા, હવે એને તો કઈ કહેવાય નહીં, એ તો મહાન માણસ છે, બરાબર છે. બચ્યું કોણ? હેનરી ફોર્ડ. સપોઝ હિનો સપોઝ આવું ના આવડે તો આ રીતના કરીને પણ તમે આન્સર લઈ શકો છો. નેક્સ્ટ, અકોર્ડિંગ ટુ વિચ આઈડિયા અ પર્ટિક્યુલર વર્ક ઇઝ બ્રેક આઉટ ઇન અ નંબર ઓફ સ્ટેપ વિચ ઈચ સ્ટેપ બીંગ કમ્પ્લીટેડ ઇન ધ ફોર્મ ઓફ નંબર ઓફ સ્મોલ ટાસ્ક. બોલો બેટા. મેં તમને શું કીધું હતું, તમે એક જ વસ્તુ કરો, બધી વસ્તુ કરવાની જરૂર નથી. ઝાકીર હુસેન ખાલી તબલા જ બગાડે છે, એને ચા બનાવતા નહીં આવડતી, પણ તબલા વગાડવામાં એ સ્પેશિયલાઇઝ. સચિન તેંડુલકર 16 કલાક ક્રિકેટ જ રમ કરે. એટલે તમે એક જ કામ કર્યા કરો તો અલ્ટિમેટલી યુ બીકમ organization employee, public relation officer, communication officer, front desk manager, employee of communication is an example of. બોલો બોલો, બરાબર. જો પબ્લિક રિલેશન ઓફિસર શેના માટે હોય? પબ્લિક રિલેશન માટે, બરાબર છે. ચલો નેક્સ્ટ, કસ્ટમર કોલ સેન્ટર આર એક્ઝામ્પલ ઓફ. ઓબ્વિયસલી અહીંયા આગળ વાત કે સર મારે ખાવાનું નહીં બનાવતા આવડતું, તો કે એ બધું જ અત્યારે વિચાર થયું કે નહીં, સ્પેશિયલાઇઝ કોમ્યુનિકેશન, બરાબર છે. નેક્સ્ટ કયું છે? અ ડેશ રિકોગ્નાઇઝ સ્ટાન્ડર્ડ રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન એટ મલ્ટિપલ લેવલ. મલ્ટિપલ લેવલ છે બકા, મલ્ટિપલ લેવલ એન્ડ એવોઇડ કેઓસ ઇન કોમ્યુનિકેશન. તો શું આવશે? ફોર્મલાઇઝેશન કે સેન્ટ્રલાઇઝેશન? सेंट्रलाइजेशन ना आवे. केम ना आवे? कारण के मल्टीपल लेवल ना हो, बराबर से. स्पान ऑफ कंट्रोल तो कितने आप कंट्रोल कर सकते हो, तो ये दो तो नहीं आएंगे. बचा कौन सा? चेन ऑफ कमांड और फॉर्मलाइजेशन. तो क्यों आवे? कम्युनिकेशन स्किल आर कोर
of employability skills to perform successful in an employer interview. અહીં જો બગા પછી PDF વાંચો. Employment interview or to leave a lasting impression at the entry level of the organization or manager business. એટલે જો communication skill is core employability skill. સાચી વાત કે ખોટી વાત? સાચી વાત કે ખોટી વાત? સાચી વાત છે. ટુ પરફોર્મ સક્સેસફુલ ઇન એન એમ્પ્લોયમેન્ટ ઇન્ટરવ્યુ. ઇન્ટરવ્યુમાં કોણ જીતશે? જે પ્રોપર કોમ્યુનિકેટ કરી શકે. મારા હિસાબે હવે તું થાણી માની હો કે ના કઈ તને ફાવે છે કે નહીં, બરાબર? તો ટ્રુ કે ફોલ્સ? Specifically, dash communication becomes the main concern of organization authorities. બોલો હે? For specifically formal, informal and horizontal communication, the main concept of organizational authority. ના, formal and informal. Formal and informal. હા. નેક્સ્ટ કયું છે? બી આવશે. વર્ટિકલ ના આવે. ના, વર્ટિકલ આવશે બકા. ઓથોરિટી છે ને, ઓથોરિટી. જો ઓથોરિટી છે ને એટલે વર્ટિકલ, ઉપર વાળો નીચે ને. કોમ્યુનિકેશન સ્પાન એટ કયા લેવલ પર હોય છે? communication span at बोलो macro level as well as micro level, upward के downward, vertical, horizontal, both B and C. કયું આવશે? both B and C આવશે. ચલો B and C. નેક્સ્ટ કયું છે? 28. Mr. Manoj, a manager, regularly communicate with his employee. It is finance, source of motivation, financial motivation. ભલે લોકોને સારું લાગે છે, બરાબર છે, એવું છે. નેક્સ્ટ, certain organizations have come up with a communicative practice of employee of the week, employee of the month. मैं કીધું મારો પેલો ભાઈબંધ હતો ઇન્સ્યોરન્સ વાળો, ખુશ થઈ ગયો, તેરે ભાઈ કા સબસે બડા જ્યાદા આયા હે. એ શું થાય? એને એવોર્ડ મળે તો એને શું કહેવાય? બોલો એમ્પ્લોયી ઓફ ધ મંથ, એમ્પ્લોયી ઓફ ધ વીક, એ બધું શું હોય? બસ મેં તમને નતું કીધું પેલો એક્ઝામ્પલ બતારે ભાઈ, એના માટે બહુ મોટી વાત હતી, મારા માટે એ બહુ મોટી વાત નથી. સમિટ અ સેલ્સ મેનેજર હેઝ ગિવન પેડ હોલિડે વિથ ફેમિલી ઇન દુબઈ. વાવ, આને શું કહેવાય? પેડ હોલિડે એટલે તમારે જવાનું, બધો પૈસા કંપની આવશે, એને શું કહેવાય? ફાઇનાન્શિયલ પણ કહેવાય અને મોટિવેશન પણ કહેવાય. પૈસા કઈ આપ્યા છે? પૈસા નથી આલ્યા એટલે ફાઇનાન્શિયલ ના આવે, બરાબર? એટલે પેલો મોટિવેશન પણ થાય, પૈસા તો કંપની આપવાની છે, એટલે બહુ થઈ એમ બી, બરાબર છે. હવે કયું બાકી રહ્યું? હા, ધ મેનેજર રેગ્યુલરલી એટેન્ડ્સ લંચ બ્રેક વિથ હિઝ એમ્પ્લોઈઝ. એને શું કહેવાય? હા, સોશિયલાઇઝિંગ. અને બધી કંપનીમાં આવું જ હોય છે મોસ્ટ ઓફ. તમે ગમે તે હોય સામાનું સાથે ખાવાનું, તો क्या बातें हो सकती है. फ्री एंड फेयर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन लीड्स टू बेटर अंडरस्टेન્ડિંગ. હા, બેટર હાર્મોની. હા, ઝઘડો ના થાય તો કયું આવે? બોથ બી એન્ડ ઓકે, મતલબ ઓપ્શન સી, બરાબર. ડેશ ઇઝ વન ઓફ ધ મીન્સ ઓફ એસ્ટાબ્લિશિંગ કંટ્રોલ. બોલો એક્ઝેક્ટલી. કેમ? મોટિવેશન એમાં કંટ્રોલ ના આવે, એટલે બે તો નીકળી જ ગયા. ફીડબેક થી કોમ્યુનિકેશન પ્રોપર થાય, એટલે આ ના આવે. આવું જ્યારે તમને ના આવડતું હોય તો યુ જસ્ટ એલિમિનેટ and then you can do. Dash is a blueprint of attaining organization goal. Plan
પ્લાનિંગ, પ્રોજેક્ટ તો ના હોય યાર, બરાબર છે, તો પ્લાનિંગ જ હોય, પ્લાન તો એક વર્ષ માટે હોય. નેક્સ્ટ क्या लिखा है? Communication enhances employee satisfaction by bringing dynamism through finding new and better way. हाँ. Friendly organization. हाँ. Addressing grievance એટલે ગ્રીવિયન્સ એટલે બોલો, મેં શીખવાડી દઉં. ગ્રીવિયન્સ એટલે ઝઘડા, कॉन्फ्लिक्ट, बराबर, આવું કરે છે, પેલું આવું કરે છે. फिर अगर ये होता है तो काम करने की मजा नहीं आती, तो ऑल ऑफ दिस आएगा. टू प्रेजेंट पन, portentous and parodies of popular proverb, expression, acronyms, famous dialogue, songs, etc. To convey the message in humor way, it is used for. કયું આવશે? તું બોલી જા ભાઈ. તો યાર માર્કેટિંગ, ઇમ્પ્રુવિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીयल रिलेशन, કયું આવશે? बोथ बी एन है, એટલે रिलेशन भी अच्छा होता है, ब्रांड नेम भी अच्छा होता है. હવે આ નહીં જાય, 10 મિનિટ સુધી નહીં જાય. चलो बेटा, द इम्पेक्ट ऑफ पुअर कम्युनिकेशन आर, बोलो पुअर कम्युनिकेशन तो શું થાય? પહેલી વાત અહીં જોઈ લો, મોરલ ડાઉન થાય, હા, લેક ઓફ ફોકસ, હા, કોન્ફ્લિક્ટ થાય, હા, તો શું આવશે? બધું જ થાય. બિઝનેસ કોમ્યુનિકેશન ઇઝ ઓલ પરવેસિવ એન્ડ ઇનએવિટેબલ. સાચી વાત કે ખોટી વાત? हाँ, बराबर. कई होता है? सोशल, साइकोलॉजिकल, फॉर्मल, इनफॉर्मल के ऑल ऑफ दिस है, બધું જ બરાબર છે. बिजनेस कम्युनिकेशन करना पड़ता है अगर बिजनेस का काम करना है तो. कम्युनिकेशन इज कॉन्टेक्चुअल एंड एवर चेंजिंग. इट मीन्स Business communication is a dynamic. डायनामिक એટલે અમે હું કીધું, ચેન્જ ફ્રોમ પર્સન ટુ પર્સન, બોલો બોલો, પ્લેસ ટુ પ્લેસ અને ટાઈમ ટુ ટાઈમ. બરાબર છે. This organization communication takes place within the limit of organization and is related to interaction, correspondence between employee regarding all organization matters. Intra. બરાબર. ઇન્ટ્રા આવે, ઇન્ટર ના આવે. બરાબર. ચલો બસ બહુ થઈ ગયું. કેટલું બાકી છે? ઓ, report, order, meeting, chats during work and lunch are example of. લંચમાં ખાતા વખતે, બરાબર, કયું આવે? ઇન્ટ્રા કે ઇન્ટર? ઇન્ટ્રા. Dash organization communication occurs when transmission of reception of information takes place between two or more parties. બોલો. In two or more, inter. Next, manager of Tata company communicates with Reliance company. तो શું થાય? Inter. हाँ, इंटर के इंट्रा, इंटर 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 इंटर. हाँ बस. तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो. होप ये वीडियो आपको पसंद आया है. अगर आगे के वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिएगा. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. और अगर ये वैल्यू लगा तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा. कुछ भी डाउट है तो ऊजा_प्रणव पे आप जाके देख सकते हो.